Hello friends, we are going to start section 107 Abetment. We can understand how abetment can be done. There are three ways given under section 107 by which abetment can be done. First, by instigation. Second, by conspiracy. Third, by intentional aiding. Here we have to understand what is the meaning of instigation. Instigation means to provoke. To provoke. You can provoke by words and by conduct. We can understand this by an example. Let us suppose A बहुत गुस्से में है और B से ये कहता है कि आज मैं C को मार दूंगा. एंड B क्या करता है? B कुछ नहीं करता, सिंपल उसके हाथ में A के हाथ में नाइफ दे देता है. Then what B is doing? B क्या कर रहा है यहाँ पे? B ने कुछ नहीं किया, ना कहा ना कुछ ऐसा उसने किया, बस उसने चाकू हाथ में दे दिया A के. तो दिस इज अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. Next we have to understand conspiracy, abetment by conspiracy. We can understand this by second clause. Abetment of a thing, a person abets the doing of a thing who engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, then it will be said abetment by conspiracy. Now we have to understand, there they are saying agreement plus some act or illegal omission has to be there. Omission. They are saying mere agreement will not constitute abetment by conspiracy. There has to be some act or illegal omission. Means agreement has to be coupled with illegal act or illegal omission. Next we have to understand third clause, intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. Means clause third says intentional aiding can be done by act or illegal omission. मान लीजिए किसी ऑफिस में कई लोग हैं जिनको चोरी करनी है. लेट अस सपोज वहां पे ए है कोई वॉचमैन, और वॉचमैन जो है चोरों से मिला हुआ है और उसने गेट खुला छोड़ दिया कंपनी का जिससे चोर इजीली चोरी कर सके. तो व्हाट ए इज डूइंग, ए क्या कर रहा है यहाँ पे? ए इंटेंशनली एड कर रहा है उन सबको. Mere aid will not constitute abetment by intentional aiding. Explanation 1 we can understand by this illustration. A police officer is authorized by warrant from a court of justice to apprehend Z. Apprehend Z means to arrest Z. Apprehend means arrest to Z. B knowing the fact and also that C is not Z. B अच्छे से जानता है कि C जो है Z नहीं है. And willfully, this is important, he willfully represent to A
जो ए है ये पुलिस ऑफिसर है, ए को ये बी रिप्रेजेंट करता है कि सी इज जेड, जो सी है वो ही जेड है, एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू अप्रीहेंड जेड। मतलब फिर पुलिस वाला सी को अरेस्ट करता है, A to apprehend C. Here B abets by instigation the apprehension of C. यहाँ पर B क्या कर रहा है? B abets by instigation the apprehension of C. अब हमें समझना चाहिए कि जो ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन किससे रिलेटेड है? इलस्ट्रेशन रिलेटेड है हमारा क्लॉज फर्स्ट से, सेक्शन 107 क्लॉज फर्स्ट। ए क्या कर रहा है? ए इंस्टिगेट कर रहा है, बी क्या कर रहा है यहाँ पे, सॉरी, क्या कर रहा है? बी इंस्टिगेट कर रहा है ए को, जिससे उसे ये अप्रीहेंशन हो कि जेड जो है, सी जो है जेड है, जिससे ए सी को अरेस्ट करना है। दिस इज अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। Next, what we have to understand, explanation 2. Whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that act. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो या तो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट और प्रायर टू दैट एक्ट, अगर किसी चीज को उस ऑफेंस को या उस थिंग को होने के लिए फैसिलिटेट करता है, एंड देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन देयर ऑफ, मतलब उस एक्ट को होने में फैसिलिटेट किया ही है, इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग। Next, we have to understand the difference between section 107B and section 120A. हमें ये डिफरेंस देखना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड सेक्शन 120A तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। What is the difference between these two sections? 127, mere agreement is not sufficient to prove conspiracy by an abetment. Agreement has to be coupled with some act or illegal omission. Means agreement के साथ साथ आपका कुछ overt act भी होना चाहिए इस section में abetment by conspiracy proof करने के लिए। पर in case of section 120A, in case of criminal conspiracy, mere agreement is sufficient to prove criminal conspiracy. मतलब आपका agreement हुआ है, बस उतना ही sufficient है आपको criminal conspiracy के अंदर liable करने के लिए। मान लीजिए आप किसी ए के साथ एग्रीमेंट करते हो, यू एग्रीज टू कमिट मर्डर ऑफ लेट अस सपोज एक्स, तो आपने सिर्फ एग्रीमेंट किया, उसके लिए आपने कोई काम नहीं किया, मतलब मर्डर के लिए ना कुछ आपने पॉइजन लिया, ना कोई वेपन खरीदा, कुछ नहीं किया, लेकिन एग्रीमेंट किया आपने किसी के साथ, तो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो। पर इन केस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, एग्रीमेंट इज अलोन not sufficient to prove abetment by conspiracy. Agreement आपका है जो किसी के साथ has to be coupled with some act or illegal omission. This is the main difference between these two sections. Next, we'll understand section 108. Thank you for watching this video.